Yes. Yes. 2-0, 2-0. Manas, एक बात बोल. Let's start this live with a very simple question. Were you surprised when the eventual happened? You know what I'm talking about. आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल. मैं नबिल के साथ देख रहा था एग्जैक्टली प्रेप फ्रॉडियोला. फुटबॉल विदाउट ओरिगी इज नथिंग. हाफ टाइम पे मैंने ट्वीट भी किया था और मैंने सिर्फ ये ट्वीट किया, भाई और बहनों, ओरिगी फुल स्टॉप. मैंने सिर्फ यही ट्वीट किया. मैंने कुछ ट्वीट नहीं किया एवर्टन ऐसे खेल रहा है वैसे खेल रहा है. एवर्टन वैसे ही खेलने वाला था. एंड निधि और मैंने हमारे चैनल पे कम से कम 25 बार तो बोल चुके हैं कि ओरिगी का एक कंट्रीब्यूशन बाकी है, और वो कंट्रीब्यूशन मर्सीसाइड डार्बी इन अ क्रंच गेम he has delivered. He was involved in the first goal, he scored the second goal. Football without Origi is absolutely nothing. He is inevitable, Nidhi. He is inevitable. यार देख, ओरिगी इज व्हाट थैनोस एस्पायर्स टू बी. वो जो थैनोस बोलता है ना, आई एम इनएविटेबल, ओरिगी जब ऐसे चुटकी बजाता है ना, तो एक्चुअली कुछ होता है. ओरिगी का ओरिगी के लिए कोई आयरन मैन नहीं बना है वो एक्चुअली. मतलब दैट्स व्हाट इट इज. ऑलमाइटी ब्लूज इन द हाउस गाइस. यार थोड़ा जाके अंकित भाई के भी चैनल को सब्सक्राइब करो. मेक्स रियली क्वालिटी कंटेंट. You will not be disappointed. Um, Everton were Atletico disguised today, but Mane should have been set 100%. I agree with this. And Mane का ना वो थोड़ा streak है. मानस क्या बोलता है? Not that I'm bothered, honestly. But यार आई मीन आई लिसन, मैं शायद से अभी भावुक होके कुछ गलत बोल लूं. तो hmm. आई विल होल्ड बैक माय सेंटिमेंट. माने ने एक आई फिंगर पोक किया और फिर किसी को पुश किया, बट ठीक है. if he feels that respect to Ankit for saying whatever he feels, I will take some time to digest that. Honestly, मैं मैनेजर तो नहीं हूँ जो मेरे को ऑन द स्पॉट कुछ बोलना है, बट फर्स्ट हाफ में एवर्टन ने जो हरकतें की हैं, ओके. हाँ, exactly. नहीं नहीं, वो तो बट है ही. फर्स्ट हाफ में एवर्टन ने बहुत बहुत हरकतें की हैं. तो ठीक है, अगर अंकित को लगता है शुड हैव बीन सेंट ऑफ, कूल. बट नहीं, but डू and यू रिमेम्बर honestly, नितिन, डू यू रिमेम्बर रिचार्लिसन ने एक हेडर मारा एंड ही वाज लाइंग डाउन. ही क्लियर्ड exactly. अ बॉल एंड ही वाज लाइंग डाउन फॉर 3 minutes. हाँ हाँ. I by the way, I agree. चलो, Mane was a little lucky, but Richarlison should have been red carded for that tackle on Henderson. उसको भी नहीं मिला ना. The thing is, अभी हम जीत गए तो anyway, let's move on from this. Um, Origi was a backbencher, always leaves his mark. But Manas, फर्स्ट हाफ कैसा लगा था तेरे को? मैं तो फ्रस्ट्रेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग बहुत मेरे गुस्से को. में था. आई सॉ टिल 35th 48th मिनट उनके सिर्फ 56 पासेस कंप्लीटेड थे, हमारे 330 कुछ थे. एंड आई वाज एंग्री, बट देन आई रियलाइज्ड, एक चीज मैंने रियलाइज किया कि एवर्टन, व्हाई शुड एवर्टन प्ले फ्लैम्बॉयंट फुटबॉल? दे डिडंट ट्रू. नीड टू प्ले फ्लैम्बॉयंट फुटबॉल. सो उनका गेम प्लान जो भी था, it was working, but it was frustrating as a Liverpool supporter. But I could understand if I saw the game as a neutral. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या कर रहे थे. बट बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था भाई. बट मतलब, बट मैंने इसलिए हाफ टाइम में सिर्फ ट्वीट डाला, ओरिगी, बस. बस यही डाला, डूड. सिर्फ यही. बट ओरिगी की तो बात हो रही है. एक और प्लेयर था, मतलब उससे पहले तो आई विल टॉक अबाउट द फर्स्ट हाफ. कमेंट्स लेते रहा यार नहीं, कमेंट्स लेते रहा. हाँ. यार फर्स्ट हाफ तो इंसेन था यार. बियर पियो आज तो गाइस. यार मैंने खत्म कर दी. प्रॉब्लम ये है. मैं आज पी नहीं रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ. अच्छा, हाँ. अ, ठीक है. मानस भाई प्लीज जेम्स को बोल के कुछ जुगाड़ करवा दो. ओरिगी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड. आई कौन विश कुछ जेम्स है? करवा सकूं. मैं कौन कुछ जेम्स है करवा भाई? सकूं. नहीं, डेविड जेम्स की बात कर रहा है, बिकॉज डेविड जेम्स ने मेरे लिए एक एक गाना सुनवा दिया पब्लिक से. बट
I think Divock Origi is on his way out, and what a parting gift! Another derby victory, bhai log. Epic, 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 epic. And in Nidhi, first half, this this was the was moment of the match. This was the moment of the match. See, I'll tell you what. I agree with you that Everton don't owe it to us to come to Anfield and play flowing football. Right? yeah. They are fighting to stay in the league. So kudos to them for trying. Kudos to them for doing what they did. But this is a game, so you have to take it on the chin if it happens to you as well. So this was the moment of the game. मजा आ गया था, मतलब मैं खड़े होके ताली बजाया था जब एलिसन ने वो किया ना. Loved it, loved it. नहीं वो Just let us. लाइक वो 91st 92nd मिनट में था कि मतलब मेरे को बहुत मजा है. जस्ट स्टार्ट थियागो प्ले 22 मार्केट पास. व्हाट इज दिस ट्रू? इज दिस एक्चुअली ट्रू गाइस? हो सकता भाई. एवर्टन ने पासेस कितने ट्राई किए फर्स्ट हाफ में? वी हैड 479 passes, एवर्टन हैड डन 59. मतलब तू समझ रहा है, उसको डिडक्ट करके उसका मतलब द डिफरेंस इज 420. तो 420 ही तो एवर्टन कर ही रही थी. अरे यार अंकित को मत बोलो यार, ही इज अ वेरी न्यूट्रल गाय. इन द फर्स्ट हाफ द बॉल वाज इन प्ले फॉर जस्ट 28 मिनट्स. आई एग्री यार, फर्स्ट हाफ बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था यार मानस. मतलब या क्या कर रहे थे हम लोग. नहीं, हम लोग नहीं, मतलब वो लोग कर रहे एवर्टन, थे. सॉरी नॉट हम लोग नहीं, एवर्टन. वो लोग कर रहे थे. अनबिलीवेबल. एंड वही तो मैं बोला ना कि सो क्रेडिट टू देम बिकॉज उनका गेम प्लान यही था टू गेट अ पॉइंट, एंड इफ दे कुड निक ऑल थ्री, लॉटरी फॉर देम. एंड इसलिए हाफ टाइम पे आई वाज नॉट फ्रस्ट लाइक मैं ट्विटर पे गया और मैं सिर्फ स्क्रॉल कर रहा था निधि, और मैंने देखा इतने लिवरपूल फैंस फ्रस्ट्रेटेड थे कि एवर्टन ऐसा खेल रहा है वैसा खेल रहा है. एंड आई वाज लाइक व्हाई आर यू फ्रस्ट्रेटेड? हाँ, लाइक they were expected to दिस play इज हाउ. like this. या एग्जैक्टली, वो लोग ऐसे ही खेलने वाले थे बिकॉज अगर वो फुटबॉलिंग टर्म से हमारे साथ compete करते, वो लोग दे वुड हैव गॉट butchered. And they Agreed. tried their best to make it a contest, and credit हाँ, to them, but वही मैं बोल रहा हूँ कि आई डोंट बिग्रज देम फ्रॉम प्लेइंग लाइक दैट वे. इट वाज एक्सपेक्टेड. हम मुझे फर्स्ट हाफ में था कि हमको यार वी हैड जीरो शॉट्स ऑन टारगेट इन द फर्स्ट हाफ. वो मुझे ज्यादा वरीइंग लग रहा था. Yeah, this Shubham, I agree with this. The Premier League is a joke. What to do? I mean, if you remember the handball against Rodri not given, City given that penalty against Wolves. तो यार ये तो है ही. I agree with you. This is perfect. Corruption, poor officiating. Agreed. Totally. Just remember Rodri. Everton don't even deserve to play in the Champions. नहीं यार देख, ये थोड़ा इमोशनल रिएक्शन है फ्रैंकली. प्रथमेश, आई थिंक फुटबॉल का कोई डेफिनेशन नहीं होता है. ऑल्दो कुछ चीजें उन्होंने गलत की थी जैसे रोलिंग ऑन द फ्लोर एंड ऑल, बट दैट होल डिफेंडिंग, दिस इज आवर फ्रस्ट्रेशन एज लिवरपूल फैंस. बट फुटबॉल हैज enough space for everyone. So yeah. Saugat, love back to you from Nepal. Thank you so much, Saugat, for all the love that you're sending across to us. मैं वही कर रहा हूँ. हाँ, वो 2-3 बार लिखा है. डोंट थिंक ओरिगी इज डन टू एफए कप फाइनल एंड चैंपियंस लीग फाइनल में मार्क जोड़ेगा पक्का. वी होप सो. हाँ भाई, मतलब आई मीन बट ये हमारा प्रिडिक्शन था ही कि डिवॉक का एक फाइनल डांस बाकी है, और वो डिलीवर कर रहा है फिलहाल. I'm very happy with whatever. This is the beauty of Liverpool right now. ना Firmino injured था, unavailable था, and half time पे के बाद Diaz और Origi आए, and I just knew Origi is going to be the difference maker. And in a way I'm going to miss him loads, bro. Like that guy का presence is phenomenal, Nidhi. Like it's phenomenal. It's And absolutely phenomenal. see, bro, and the thing about Nidhi, तेरे को Origi पता, I'm so sorry, Nidhi, to cut you short. Before he was bought into the game, got onto the game, 55th minute पे he was warming up. The cop was singing Divock Origi. They were shouting to Jurgen Klopp कि भाई यही करेगा चेंज, लेके आओ, लेके आओ लेके आओ. यार. एंड ऑनेस्टली भाई मैं एक बात बोलूं, डिवॉक ओरिगी ना, वन थिंग I'd like to say is that kind of attitude is very rare. You see, if Firmino was fit
for this game, no, he हाँ, probably might not even have been on the bench, yeah, right? yeah, Definitely Firmino would have been preferred, right? Now, yeah, for a guy to not play, still contribute in so many big moments, and still keep that attitude. Generally, generally क्या होता है, players will start to sulk, players will start to complain कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है. Origi का attitude, he keeps coming, keeps scoring, he's impeccable, यार. I mean, his movement as well, yeah. I mean, the space he creates for other players, he's brilliant. I yeah. think any team, I think एक और लाइव पे मैं था कभी, एंड हम लोग थोड़ा भावुक हैं, तो हम ऑब्वियसली थोड़ा बात कर रहे हैं ओरिगी के बारे में. कमेंट्स लेते रहे निधि. हाँ, हाँ, मतलब हाँ. बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि ओरिगी, व्हाई इज एसी मिलान गेटिंग ओरिगी, दे शुड बी गेटिंग अ बेटर प्लेयर. ओरिगी, अग्रीड, मतलब ही इज, ही शुड बी, ही शुड नॉट बी, उतना उतना रेगुलरली खेला नहीं है वो, मगर हैट्स ऑफ मैन, हिज एटीट्यूड इज जस्ट इम्पेकेबल. यू मैं कैनॉट पहली बात डाउट. बोलना चाहता हूँ, 65 लोग पीपल देख रहे हैं, 37 लाइक्स है, प्लीज ठोको लाइक. हम लोग मैच जीते हैं, हम लोग डाबी जीते हैं. We are 5 games away from glory. Thank you, Sagat. Please do like the video. It would mean a lot. It would mean a lot to us. Uh, yeah. Everything about this season is remarkable, bhai. Like whoever's coming on is making a difference. Uh, yeah, and even when Mane got substituted, Nidhi wo ज़्यादा रोया नहीं, if you remember. Like वो, नो. like everyone. Keita, Mane, Utre, boom. Diaz, Origi, and no one was complaining. Everyone was working for the cause, which I think is a great thing about this team right now, because it was nil-nil. We knew we had to make a difference, and I'm just so happy right now, dude, of because of the way we're playing right now, and the team spirit that we're showing. Shanti Singh, now that Everton are getting relegated, I think Divock PL legacy has been stamped. Listen, I don't think Everton are relegated right now. Just yet. Just yet. Just yet. Not that I care. I really don't care. If they stay up, I'll be happy as well, because the derby is a good game. Bye. एक तो, एक ये पता है, आज शायद जिम बेगलिन वाज सेइंग दैट, राइट, दैट एवर्टन हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ एटलेटिको मैड्रिड, समथिंग लाइक दैट, ही said. He said that it's football versus anti-football. हाँ, he also said that, Lampard has been watching a lot of. एक तो ना कोई भी फुटबॉल नहीं खेलना चाहता है, द फर्स्ट थॉट दैट एवरीवन एटलेटिको मैड्रिड, वो लोग भी सोचते होंगे कि हम लोग नहीं, स्पेनिश चैंपियन हैं. but Nidhi, first half में, if you think about it, पिकफोर्ड कितना टाइम ले रहा था. भाई रिचार्लिसन वो किस हर किस बॉल बात में, रिचार्लिसन किस किस बात पे गिर रहा था. लाइक इट वाज काइंड ऑफ वियर्ड. इट वाज लिटिल वियर्ड, ब्रो. शूटर व्हेन ही सेज लिवरपूल, यार तेरा नाम देख के हंसी आ रही है और कुछ नहीं. या. मस्त. भाई कैसे सोचते हो यार, ये क्या नाम है. Liverpool this season is unstoppable, and as a Barca fan, I agree that they can beat any team. I hope. यार, यार जावी के अंडर तो बारसा बहुत अच्छा फुटबॉल खेल ही रही है, मतलब उसमें उसमें कोई डाउट ही नहीं है. Said they would sit low block and needed something magical, and Lord Divock came and got pre-assist and a goal. It was Divock Origi moment could be decider. Thank Klopp, substitute came at right time. Yeah, yeah, yeah. 100%. Yeah, Klopp. I think the substitutes change these games. Um, मानस, एक प्लेयर के बारे में मैं तेरे से और बात करना चाहता हूँ. लुइस डियाज, although he didn't इंडी get a इंडी कॉप assist. का कमेंट ले ले. इंडी कॉप का कमेंट ले ले, फिर उसके इंडी को बाद हाँ. सुनना मेरे को दिख. I नेक्स्ट. had gone. Oh, Indie Cop in the house, guys. I had gone crazy in the first half. Seriously, Everton was annoying. They are annoying. Um, हाँ, but yeah, निधि तू Nitika. क्या पूछा था. But हाँ, मतलब ये बस बोल रहा हूँ. But यार नितिका, they don't owe it to us to come and play flowing football and just let us pass 4 balls into the net. उनका ये strength है. They played to that. Although I agree with you, annoying तो थे वो लोग. There is zero doubting that. But yeah, um, मानस, मैं तेरे से पूछ रहा था. One player that did not get an assist,
was not on the score sheet, but I think he was the guy to pull Everton out of shape completely. Luis Diaz. What are your views? देख लुइस डियाज का क्या हुआ ना निधि, व्हेन ही केम ऑन इमिजिएटली 1-2 मिनट के बाद हम लोग ने गोल मार दिया और उसके बाद उसको बहुत टाइम स्पेस मिला। मैं नबिल के साथ मैच देख रहा था। नबिल बाय द वे मेरे नबिल विरानी हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है और हम हमेशा हमारा Sorry, sorry. स्ट्रीम Diaz का got an assist. My bad, my bad. Diaz got an assist. ही गॉट वो असिस्ट उसका फॉर द assist. सेकंड गोल, फॉर द सेकंड Yeah, गोल। yeah. Sorry, 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 sorry. हाँ, नो स्ट्रेस। बट वो बोल रहा था डियाज को ला, डियाज करो, तो मैंने उसको वही समझाया कि डियाज को स्पेस नहीं मिलेगा। बट हम जब इमिजिएटली आए, ओरिगी साला ने कंबाइन किया रोबो गोल और उसके बाद डियाज को स्पेस ही स्पेस मिल रहा था। सो इट वाज अ गुड डिसीजन नॉट टू स्टार्ट डियाज मेरे हिसाब से। बट डियाज इज अ क्लास प्लेयर, लाइक ही इज अ क्लास प्लेयर। और उसका जो भी शॉट था, असिस्ट था, वॉली था, जो भी था, इट 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 फेल्ट इनटू द लॉर्ड द लेजेंड डिवॉक ओरिगी। तो मैं आई कांट कंप्लेन। I think Diaz is going to start the next game with Mane and Salah. I Yeah. think that is going to be the case. And yeah, Hendo Mane, also was good when he came on. And listen, I cannot complain. मैं तो बहुत खुश हूँ यार, the way we are playing this season, सब कुछ जो चल रहा है भाई, there's nothing to be complaining about यार. Yes, Ankit, Diaz is such a bargain. I agree. 120%. He is worth his weight in gold, Nidhi. Fantastic player, yaar. Matlab, brilliant. Manas, what did you think about Trent's performance today? Defensively good. He was good, right? दो तीन बार पीछे he was tracking back and he did well. His corners were shit. Yeah. Majority of his, I think, काफी of his corners were shit, and I'm gonna say that very openly. Corners were because I think in the game we had like 20 odd corners. I'm gonna check the stat right now. Okay. I think Just Trent was not getting space at all, and that was, moving forward. Obviously, it was. मानस तेरे लिए कमेंट है सकीबुल का, उसका नाम ले ले बस. Sakibul Islam Shimul, Manas Bhaiya, please take my name. Love from Bangladesh. Do you podcast Liverpool USL match day? Sakibul Bhai, Sakibul Islam Shimul. I hope you are having a very steady and healthy Ramadan. I hope you are cleansing your body, and I hope that Liverpool are helping you reach a higher state in life, because that is what Ramzan is all about, Ramadan is all about. Let's hope that we all together achieve something beyond this reality, beyond this world, which is the quadruple. As a Liverpool fan, I hope all of us channelize and क्या बोल रहा है? no, no, I'm just trying to say, I hope we manifest something very beautiful in life. During the holy month of Ramzan, we manifest something beautiful, क्या क्या बोल which रहा है will. भाई तू? चलो चलो, let's move on. What a I, what a I, t-shirt. I'm channeling my inner Brendan Rodgers, bro. किसका टी-शर्ट, मेरा या उसका? I think I think he's talking about yours. Yeah. तो इसको हटा देता हूँ, उसका टी-शर्ट थोड़ा अच्छे से देख लो. इन मोहतरमा का नाम है सानिया मल्होत्रा. मतलब मैं कमेंट ले लो सच्चे नीतू भाई. हाँ, ले रहा हूँ यार. मैं सच्चे दिल से रिलीजियस लोग को कॉन्ग्रेचुलेट करूं, वेल विश करूं, तो लोग बोलते हैं क्या बोल रहा है। एज एन एथियस्ट, मैं अगर लोग को वेल विश कर रहा हूँ, निधि तू ही मेरे ले रहा है, मतलब व्हाट द हेल निधि। मैं कहाँ कुछ ले रहा हूँ. तेरा 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 स्पीच बहुत मजा आया सुन के. Off late, Trent's ball is not affecting the game. पेप फ्रॉडियोला लिखता है मानस इज द वानाबी सदगुरु। Let's not go there. Let's not go there. Um, नहीं, अच्छा. but everyone who's fasting, please, I hope you guys well. Take care of yourself. Robertson and Diaz combined really well. I agree. I agree. They were absolutely brilliant. I think Diaz
brings that chaos in our attack. He Yeah, brings, that's you true. know, he's got that silky feet and he's got, उसके पैर से बॉल लेना बहुत मुश्किल है. तो यार काफी, मतलब बहुत ही ज्यादा फ्रेशनेस लाता है वो हमारे अटैक में. नो निधि भैया आपका, यार Sky 32, यार you can buy this t-shirt, just DM us, we can send it to you. This is Menace in the Monk का t-shirt. East or West, Origi is the best, there is zero doubt. um, संपत से निधि भैया आपको आपका ओरिगी मोमेंट मिल गया आखिरकार. सबको मिल गया यार, मुझे सिर्फ थोड़ी. ओरिगी इज द मैन फॉर द बिग मोमेंट्स यार. हैप्पी बर्थडे सचिन, हैप्पी बर्थडे सचिन इंडीड. ओरिगी Uh, विशेस हिम. Fahad is saying love from Barca and Bangladesh. भाई ये तो when someone says love from Barca तो मतलब thank you so much यार. निधि आप बारसा से Somendu says, unfortunately, Man City don't have to face any tough opposition like we had today. Had there been such a fixture where there was survival in question and just Derby getting to some add the water ना spice, निधि. they would struggle badly. They did, yeah. They did yesterday. They played a Derby, sorry, they played a relegation threatened team and पूरा उनको हवा में उड़ा दिया यार सिटी ने. तो ऐसा नहीं है. City is playing a lot of, you know, City is playing a lot of relegation threatened team as well. So, okay, let's take a few more. Diaz, the confidence king. Agreed. Can Richarlison contest for top scorer next season in the championship? देखते हैं यार, देखते हैं. Um, Diaz brings खौफ in the opposition. I agree. I agree. Unfortunately, my comment twice. No problem. इसके बारे में yes, I totally agree. तेरे ऊपर लड़कियां मरेंगी. शकीबुल सेज इंशाल्लाह वी विन क्वाड्रुपल बट सिटी ड्रॉप पॉइंट. हाँ यार देखो, सिटी को देख के मुश्किल ही लगता है, जिस हिसाब से वो लोग खेल रहे हैं, जिस हिसाब से उनके फिक्चर्स हैं, देख के तो मुश्किल ही लगता है कि सिटी विल ड्रॉप पॉइंट्स. बट फुटबॉल है, यू नेवर नो. ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट कीप चिपिंग अवे. वी हैव टू कीप, you know, doing what we do. So, and hopefully, you know, City will slip up and we won't. That will hopefully, you know, happen, and we can hope for that. Manas, we I don't know if this is serious. um, यार एल कोको, आप दोबारा कमेंट कर दो ना. बहुत सारे कमेंट्स हैं, आपका मिक्स आपका मिस हो जा रहा है. आप दोबारा एक बार कमेंट कर दो, मैं आपका डेफिनेटली कमेंट कमेंट ले लूंगा. Hi from Mongolia. I don't know if this is true, but if you are from Mongolia, brother, thank you so much for joining. Yeah, we've Listen, never. if you're joining us from Mongolia, listen, so much love and respect to you, man. Like really, really appreciate it. Yeah. Thank you Yeah, so much yeah. for joining us from El Mongolia. Kokoi, If you are. bro, El Kokoi, bro, आप दोबारा कमेंट कर दो, आपका कमेंट जरूर ले लेंगे. तौसिफ यार, first of all, thank you for the super chat. Really appreciate it. Tausif says Richarlison spent more time rolling on the pitch than on his feet, but it had to be our savior, Origi. God, I'm going to miss this man so much. तौसिफ भाई पहली बार थैंक यू सो मच. आई थिंक तौसिफ सेकंड टाइम कर रहे हैं. आई हाँ. थिंक आज ही सेकंड टाइम कर रहे हैं. थैंक यू तौसिफ भाई, रियली अप्रिशिएट इट. हाँ यार, हम लोग यही बात कर रहे थे तौसिफ की. हम लोग हाफ टाइम पे मैंने ट्वीट किया, आई एम सॉरी मैं थोड़ा इधर बोल रहा हूँ, बट मैं बहुत ही श्योर था कि डिवॉक ओरिगी इज गोना बी आवर सेवियर, एंड ही वाज इन्वॉल्वड इन बोथ द गोल्स. इट वाज जस्ट I just felt it, Nidhi, कि Divock is gonna be that person who does it for us, bro. Everton were irritating. Arnav, Who has a yeah, Manchester City logo. who has a Manchester City logo, says Everton were irritating. Well, for us, they definitely were, but I think as Man City fans, you might have loved the first half. और भाई मजा आ गया, बिल्कुल बिल्कुल मजा आ गया. Everton Swansea Stadium near completion only to host Norwich and Watford. Love it. Listen, if यार अभी अभी रेलीगेट हुए नहीं है वो लोग यार, थोड़ा रुक जाओ.
निधि भैया, हाउ अबाउट लिवरपूल विनिंग 5-0 टू रियल मैड्रिड? अरे भाई, पहले पहुंचने तो दो। भाई वियारियल को हराने तो दो। भाई और वियारियल is going to be very tough, हाँ, over two legs. Just letting all the Liverpool supporters know out there. बहुत मुश्किल होने वाला है भाई। एवर्टन नीडेड द पॉइंट्स टुडे, इसलिए थोड़ा वो खुल गए सेकंड हाफ में, बिकॉज उनको भी पॉइंट्स चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो वियारियल डोंट नीड टू डू दैट। थैंक्स Menace राहुल। the Monk is growing so fast. Thank you so much, Rahul. Really appreciate it. आप तो हमारे Shaunti बहुत says, बहुत ही अच्छे सपोर्टर हो। थैंक यू सो मच राहुल। हमारे और क्वाड्रुपल के बीच में दो स्काउजर्स हैं, कोडी का वुल्फ्स और जेरार्ड का विला। बाय द वे, जेरार्ड का विला को हमको भी खेलना है, तो एंड या Newcastle away will be really tough. They are in a really good form, and I agree with this year. Sorry, bro, I don't read Bangla, so I can't read your name, but That's okay. definitely, yeah, it is going to be a tough game. It is going to be a tough game. एक comment में देख रहा हूँ उसका। निधि कमेंट ले लो निधि भाई, ऊपर वाला। हाँ, वो ही मेरे को पता नहीं चल रहा कौन सा कमेंट, वही मैं बोल रहा हूँ यार। एल कोई भाई, यू आर, इफ यू स्टिल हियर इज हियर। एरिक इज How सेइंग are you guys लाउड। feeling? Obviously, as fans, we want to win it all, but City is ahead. Chelsea is tough. UCL will be tough too. As a new fan, I ask, how do you remain calm? Like, let's enjoy, etc. I get nervy. दैट्स अ Um, गुड क्वेश्चन निधि, एज that's a बिकॉज good question. बिकॉज एज एज ओके एज निधि, तेरा क्या ओपिनियन है टू अ न्यू फैन? तेरे को क्या बोलना है? बिकॉज देख, इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स निधि, फॉर स्काउसर्स जो सीजन टिकट होल्डर्स हैं, जो 50 साल से जा रहे हैं, तू और मैं भी न्यू फैन है। सो हाँ तेरे को ये बंदे या लेडी को क्या बोलना है? यार, मैं देख, मैं एक इसमें टू ब्रिंग अ लिटिल बिट ऑफ पर्सनल कॉन्टेक्स्ट इनटू इट। यार, आई हैव जब हम जब मैंने पहली जब मैं पहले जॉब में था ना, तो एक मैच हुआ था नॉर्थहैम्पटन टाउन के साथ। हम जो तो हारे वो, थे। हाँ, वो हम पेनल्टीज में हार गए थे। वो मैं ऑफिस में झूठ बोल के आई वॉच दैट गेम। So when I started watching football in around 98 99, उस टाइम तो फुटबॉल लाइव भी नहीं था। 2001 से लाइव टेलीकास्ट शुरू हुआ है। तो वी वर ओके, वी वर अ कप टीम। 2005 में ऑफ कोर्स वी वन द चैंपियंस लीग, 2008 में वी वेंट टू सेकंड, 2007 में भी वी वेंट टू सेमीफाइनल्स, चैंपियंस लीग फाइनल। उसके बाद देयर वाज अ वेरी बैड फेज, एंड देन क्लॉप केम एंड द राइज स्टार्टेड। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि what I'm trying to get at is, this is in a very special position, right? People are saying, if Liverpool bottle the quadruple, there is nothing in the world called bottling the quadruple. You can't bottle a quadruple. You bottle something that you already have in your hands. So I agree, yaar, El Kukoi. It could just mean that there is a possibility that we end the season with just the League Cup. It is a real possibility. But this time as a Liverpool supporter, I have never seen it. I have never seen this time. So I will make sure that I enjoy it to the maximum. जीते नहीं जीते वो अलग बात है। हाउ टू स्टे काम यार, मतलब ऑनेस्टली, जहां तक मुझे लगता है कि दिस इज दिस इज अ स्पेशल स्पेशल टाइम, एंड दैट्स द रीजन आई एम सो काम पर्सनली। तू क्या बोलता है मानस? यार मेरा आंसर लंबा होगा। अगर अगर लोग रेडी हैं सुनने के लिए तो बता दो, इफ यू गाइस आर रेडी टू लिसन टू इट, तो फिर मैं बता दूं। लेकिन अगर किसी को भाषण नहीं सुनना है तो विल मूव ऑन। अगर आप लोग को सुनना है मेरा आंसर तो बता दो, ऑनेस्टली, बिकॉज दिस इज अ वेरी, आई जेन्युइनली फील दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अगर इट इज आपके अ पास टाइम है ब्रिलियंट क्वेश्चन, इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। या बिकॉज इट्स genuinely a question which has touched a nerve for me। तो अगर आपको सुनना है सब लोग को तो मैं बता दूंगा। रेडी गुरुजी लेट्स लिखते हैं। लेट्स लेट्स पब्लिक पब्लिक लिखते हैं रेडी। रेडी आई भाई, एम ऑल रेडी हियर। गुरुजी। देखो, इसको ना थोड़ा हम लोग और कमेंट्स ले लेते हैं, एल को कोई, इसको हम लोग थोड़ा हाँ, एंड के लिए रखते हैं।
अगर सब लोग रहेंगे तो Yeah. हम लोग सुनेंगे. Hmm. Done, done, done. ओके, थोड़े और कमेंट्स ले लेते हैं. थियागो अगेन डोमिनेटिंग एंड पिकिंग अप दोज राइट प्लेयर्स टू पास. व्हाट अ प्लेयर टू वॉच. 100% यार. थियागो इज अ जॉय टू वॉच. एक Shahid Bhai has written, what a win, lads. My man from Lahore, Pakistan has written, what a win, lads. Shahid Bhai, maza aa gaya. शाहिद Bhai, भाई. listen, all of y'all should follow Shahid Bhatt on Instagram and Twitter. The man is a legend. Yeah, He is the and head of Pakistan Reds. and वो you'll get he to has and hosted you'll get Ian to watch Rush. a and you'll get to watch a lot of Anfield videos free में. हाँ, So exactly. So yeah. शाहिद भाई को follow um करो. Having we all City right. will either win. निधि मेरे को एक feeling है कि the team that wins the Premier League now will win the Champions League as well. Possible. It is. Yeah, it is pretty much possible. I feel so happy that you read my comment. I screen recorded and instantly. यार thank you यार. इतनी मतलब इतनी बड़ी कोई बात नहीं है. It's all good. फहद अब्दुल्ला, हम सब लिवरपूल सपोर्टर्स हैं यार, इसमें बड़ी बात क्या है यार. हु केयर्स यार, हम लोग एक ही चीज करते हैं, वो लिवरपूल को सपोर्ट करते हैं. हमारा तो रिलीजन एक ही है, लिवरपूल, सो कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई. होप यू एंजॉयिंग योर रमजान ब्रो. Thiago the La Masia product, indeed brilliant. Uh, I was going crazy. Come to Lahore. We welcome you all. How we wish. How we wish. How we wish you. थियागो थियागो अल्कंटारा, किसी ने बोला गा दो तो मैं गा दिया. थियागो Where is your beer, थियागो guys? यार मैंने तो खत्म अल्कंटारा. कर दी. मैंने तो खत्म कर दी. लाइक आज Uh, आज राहुल, आज मैं पी नहीं रहा हूं. आज मैं सिर्फ पानी पी रहा हूँ, ग्रीन टी पी रहा हूँ, तो he एक moves और through दो the लीटर पी. midfield like nobody does. The first time I saw him, I knew it was love. को किसका गाना है ये? अरे ये थियागो का गाना है. भूल गया क्या तू? मैं तो सिर्फ थियागो थियागो अल्कंटारा वही गाता हूँ मैं भाई. He moves through the midfield like nobody does. The first time I saw him, he knew it was love. He play, he played through the field, his passes never miss. Thiago Alcantara, he takes the fucking piss. Thiago. को चलो भाई, गाना भी गा दिया. थियागो अल्कंटारा, थियागो Uh, I love this. थियागो There अल्कंटारा. is there is this video on YouTube by the man himself, by Boss Knight. उसमें he is sitting in a pub and singing this song. Listen to that song, यार. It's beauty. मतलब melody, mellifluous. क्या क्या adjectives use करूं? भाई योगन क्लॉप का जो गाना है ना, एग्जैक्ट ओ भाई, पेप ने इमीडिएटली डाल दिया. योगन क्लॉप का जो गाना है ना भाई, वो मैं कुछ भी कर रहा हूँ ना, दिन में क्रॉसफिट जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ, अपने डॉग को वॉक कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, ये मैं गाना गाते ही रहता हूँ. निधि, योगन वो क्लॉप का जो गाना है, क्या बोले क्या भाई. इट्स ब्यूटीफुल ब्रो, इट्स ब्यूटीफुल. it's it's absolutely brilliant. Um, yes, indeed, Amog. Yeah, that was the song that Carragher put on his Instagram. It is absolutely brilliant. But there is this, there is this on YouTube. So brilliant. अरे यार, ये आकाशवाणी समझ लिया पब्लिक ने. प्लीज सिंग क्लॉप चैट. भाई अरे गाने रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो? भाई, ये एमटीवी पे नहीं आए हो तुम लोग, VH1 रिक्वेस्ट सॉन्ग. अच्छा, निम्बी अगर निम्बी अगर आप अगर आपको गाना है, we'll send you the link and you आओ can और sing गाओ. it. Please go. Please. Nimbi Don't worry asks, about it. guys, if you had to choose between the Premier League or the Champions League this season, which one will you choose with hand on heart? Champions अरे League. भाई, um, Premier League. Champions My League. whole my whole family are Mohan Bagan supporter for the 3-4 generations, but we are still nervy whenever derby or big match takes place.
आई नीड द टिप्स गुरुजी प्लीज. हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे. बाय द वे 79 पीपल ऑन द लाइव. इट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. थोड़ा थोड़ा लाइक वाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, मजा आता है. I know even I want City to win, but it's not easy. Liverpool is not dropping points. But yeah, Arnav, if you don't drop points and we don't drop points, you win the Premier League. Simple. Again by a point. Arnav, So do you want to come on the live, because you seem to be a very level-headed person as a City fan? So please join our live. We would love to. If you want to be on the live, just say yes. Nidhi will try to get in touch with you and send you the link so that we can take you how on. how And will I get in touch with him? somehow we will try. Is all that I'm saying. We should do one show discussing the songs. This is a good idea, Surya. This is a good idea. But We can do no, so a Surya, will you sing a song? Like हम तो कर देंगे public, हम नहीं गाने वाले सब song. वी हमको चाहिए, देखो हम करेंगे वीडियो, लेकिन हमको चाहिए कि लोग उसमें आके गाना गाएं. हाँ. और फिर पूरी दुनिया भर में ट्रोल होंगे फिर हम सब सेम लोग. मानस भाई, पढ़ते पढ़ते, अरे ट्रोल से कौन डरता है यार. पढ़ते 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 पढ़ते. चलता रहता है दिमाग. दिमाग में सही बात है भाई. हाँ, exactly. वो गाना. Jurgen said to me, you know we'll win the Premier League. You know he said so. I'm in love with him and I feel fine. I'm so glad Jurgen is red. I'm so glad it delivered what he said. Hey, Jurgen said that we know we will the Premier League. You know he said so. गा दिया एक तुम एक लोग के लिए. एक 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 कॉल हम लोग सेटअप करेंगे. हाँ. जिसमें वो कॉल बहुत ही फनी होने वाला है, जिसमें हम सारे फैंस मिलके गाना गाएंगे. मैं तो खा गा नहीं सकता हूँ, बट मजा आएगा. अमोक, थैंक यू सो मच यार. गोल्ड कंटेंट, तुमको मजा आ रहा है, पता नहीं हम पे हंस रहे हो या हमारे साथ हंस रहे हो, बट एज लॉन्ग एज तुम हंस रहे हो, इट्स गुड. Yeah. Views on Pochettino getting sacked. Did Pochettino get What? sacked? What? PSG When? did just one. I don't think Pochettino got sacked. I I mean, don't know whether Pochettino PSG was. just won the That's league, right? right. How can, Yeah. I don't think this is true. Can someone confirm if this is true? I don't know whether I have no idea. I have I don't absolutely no. I don't think that's true, but can someone confirm? Best नहीं stream. पता. Thank you so much यार एल्को कोई. लोग तो बोलते रहेंगे दुनिया गई तेले ने, लेट्स सिंग, you'll never walk alone. Agreed. तो Um, गाओ क्रिस, क्रिस एम गाओ आप हमारे लिए. वो उधर गाएगा, हमको थोड़ी सुनाई देगा. नहीं आओ आओ स्ट्रीम पे. Yeah, Poch Conte is sacked, not official yet. Conte going to PSG. What? यार ये लाला की न्यूज तो मैं ना कभी नहीं नहीं मानता ये हूँ. नहीं, लेकिन सिर्फ लाला नहीं, और भी लोग बोल रहे हैं. कोई तो बोल रहा है जेबी वेबस्टर को बुलाओ भाई. अरे कोई तो नहीं, राहुल, हमारा राहुल बोल रहा है भाई. सही में मैंने नाम नहीं देखा, राहुल मतलब यार. ये तो कोक स्टूडियो नहीं है भाई. भाई, मतलब भाई उस मतलब इतना शक्कर आसान रहता एहसान ना, लॉय. मतलब इतना आसान रहता ना, तो सानिया मल्होत्रा मानस के टी शर्ट पे नहीं होती, उसके साथ डेट पे होती. अगर हम इतने आसानी से लोगों को बुला सकते तो. ये आपने दिल तोड़ दिया मेरा. uh, um, all right, let's take a few more comments. Big ऐसा fan क्यों from बोला था? Bangladesh. Thank you, दीदी yaar. ऐसा क्यों Kyle, बोला thank you था so much आपको? for joining in. Um, इतना दिल. let's play for Bobby to be. I think the news is that Bobby will be fit for the Villarreal game. That's the news. So yeah, Kyle Hudlin says big fan from Bangladesh. Thank you थैंक यू so सो much, yeah, मच मैन. Kyle. 75 Uh, people watching, guys. Please do like the video, man. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मैनेस इन द मॉन्क पे, प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार. अच्छा लगेगा. Conte offered himself to PSG. Yeah, that sounds a little wrong. मतलब, I think he offered his manager. Sorry, मतलब मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ. I'm just. Richarlison twisted his ankle while tackling Thiago. I guess he was not faking it. Uh, it felt like he got hurt, but यार थोड़ा ना. और
आज एवर्टन के साथ ना थोड़ा द बॉय हु क्राइड वुल्फ वाला सीन हुआ है. मतलब व्हाट दे डिड इन द फर्स्ट हाफ ना, इट केम बैक टू बाइट देम इन द सेकंड हाफ. ऐसा मुझे लगता है. लेट्स टेक अ फ्यू मोर. Yeah, of course. Liverpool is playing well, but sorry guys, it's coming home. Manchester is blue. Very much possible, yeah. Very much possible. जैसे मैनचेस्टर तो ब्लू है ही है वो, बट कमिंग होम से रिलेटेड नहीं है. मैनचेस्टर एट द मोमेंट इज ब्लू. And it is indeed very much possible that the league goes to City. There is no doubt. But one thing that we will do is we'll fight till the end. That's there, and hopefully it turns for us. Um, यूनाइटेड और बारसा विस्ट यार, हमको तो यूनाइटेड का ही डिसलाइक ज्यादा है ना. हमको तो बारसा से हम खेलते ही कितना है. ओके. कोई बोल रहा है मैनचेस्टर इज बॉल्ड राइट नाउ. एक ट्वीट मैंने देखा था, किसी ने तो किया था. मैनचेस्टर डार्बी रिव्यू लास्ट नेक्स्ट सीजन. और उसमें एक साइड था बाला के मूवी का पोस्टर और दूसरे साइड था उजड़ा चमन जो एक मूवी आई थी उसका पोस्टर. पब्लिक इतना क्रिएटिव है, कुछ भी. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. मानस, मैन ऑफ द मैच राइट? Ooh, that's a good one. Yeah, Andy Robertson is a very. I think Andy Robbo for me. Nidhi, for you? It's a tough one, yeah, because It's a tough one. It's a tough question. yeah, yeah. I I would go for Robbo. Yes, I think Robbo was brilliant. I think, and even Salah, yeah, even Salah, he didn't Like score, Origi but also made a huge impact after coming on. Genuinely feel, but I think Robert deserves it. मेरे हिसाब से. and but I think Salah also was fantastic today, although he didn't score and was unlucky. फुटबॉल was फुटबॉल इज नथिंग विद इंडीड. ये तो सच बात है यार, ये तो बिल्कुल सच बात है. एलिसन मॉक्ड पिकफोर्ड, आई वाज डेड. वो बहुत ही फनी मोमेंट था. That was the moment of the game for me. If you ask me, like the 90 seconds, he picked it, doom, 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 गिराना. Bhai, I was giving him ovation. I was like, Ali, मैं तो खड़े होके you took the मैं तो piss. खड़े You होके took the ताली piss लगाया. out of him. Conte तो I think is fake news, but Poch has great Xanax. समझा नहीं यार. Xanax is a pill I know what anyway. Xanax is. I know what Xanax is, but समझा नहीं मैं. Origi deserves a statue. Wait, not at Anfield, rather at Goodison Park. 6 goals in नहीं 10 games against Everton for him. नहीं, बट And इतने बड़े प्लेयर का स्टैचू अच्छा नहीं लगेगा ना किसी चैंपियनशिप टीम के स्टेडियम के बाहर. Were you surprised that Hendo didn't start? I was. I thought we wanted Hendo in this game. But I Manas, think what did you? me and Nidhi ये सोच रहे थे कि केटा के जगह पे हेंडरसन शुरू करेगा आज, बिकॉज डाबी है, इंग्लिश प्रेजेंस, वो हमें लगा था. बट आई थिंक दैट ओनली मीन्स वन थिंग निधि, मेरे हिसाब से कि हेंडो विल प्ले अगेंस्ट वियारियल. मेरे हिसाब से हेंडो विल प्ले अगेंस्ट वियारियल नाउ. हेंडो 100%. I थियागो don't give a फेबिनो मिडफील्ड में होंगे अगेंस्ट वियारियल, और जोटा की जगह लुइस डियाज खेलेगा. मेरे हिसाब से ये होने वाला है. सो मैं थोड़ा सरप्राइज था, but I don't care anymore that because we got the 3 points today. So that means Hendo will play against Villarreal. From my gut feeling, I think Villarreal is going to upset Pool. I don't know which team is Pool, Kyle. So Villarreal is there a team called Pool in this in La Liga? I don't know. मेरे को बता दे, because we don't know any team which is called Pool. So please let us know, Kyle, which team we're Bring referring to. Ayush Lala on the show फिर से. Indian Neil Jones. More like Indian जो more like Indian Indie Kaila. I'm sorry. But I found that so funny too. नील जोन्स नहीं है भाई. लाला अगर तू इस पे है तो मतलब नहीं.
डू इंडियन यू सी टीम अस कोच लाला को इतनी इतनी इज्जत दे दी भाई। इज्जत मतलब नहीं दे सकते हैं यार, इतना 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 अच्छा नहीं है लाला। डू यू सी हम्म। अस गोइंग ऑल आउट फॉर अ 4-5 गोल क्वेश्चन एंड रोटेट द स्क्वाड इन द सेकंड लेग? भाई 4-5 गोल विलारियल के अगेंस्ट मारना मतलब बहुत, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आई होप वी डू दैट, बट इट्स गोइंग टू Can बी you tell me how will we pronounce this guy's name? एल कोकोय। El Cocoy. It's the Champions League semi-final. चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल है। रिस्पेक्ट दो सामने वाली टीम को। लाइक मजाक नहीं बहुत चल मुश्किल रहा है होगा भाई। भाई। मजाक नहीं चल रहा है। 4-5 मतलब किस दुनिया में हम जी रहे हैं यार। ये बहुत ही अनरियलिस्टिक बात कर रहे हैं हम लोग। हम लोग भाई चार चैंपियंस लीग पांच की गोल ये सामने वाली टीम ने यूवेंटस और बायर्न म्यूनिख को बीट के हारा है। ओवर टू लेग्स। ओवर टू लेग्स। एक लेग नहीं, ओवर टू लेग्स। सो दे विल बी अ टफ टफ गेम भाई लोग। We can't take them lightly at all. This is going to be a very tough game bhai. How do how you so much how do you dedicate so much time to this channel, respect to your wife and kid? This channel must be like a southern tour, यार। Nidhi, this is up to you Nidhi. नहीं यार, I've been blessed with a very good woman in my life. She is very supportive. उसके support के बिना तो possible ही नहीं है। There have been times when I have, जैसे अभी dinner के बाद I just came straight here to do this chat. So I agree यार, my respect to my wife and kid as well यार, but she's very supportive. सौतन तो नहीं, she supports me a lot, but um, that's what it is. Rahul, thank you so much for the super chat again. Yeah, it feels so amazing. It's 12:30 in the night, and we are all singing and laughing here just because of you two. Not because of us, yeah, because of the big German man that leads us. Because of him. But thank you so much, yeah. This is really sweet of you to say that. Um, राहुल यार तू इतना मतलब इतना सपोर्ट करता है बहुत मेरे को स्वीट है बहुत यार ही तू। मेरे को इमोशनल लगता है यार। तू इतना हमको काइंड वर्ड्स देते रहता है हमेशा। What about semi-final one, City versus Real? Any thoughts, Manas? निधि आई थिंक मैनचेस्टर सिटी हैव अ फ्यू प्लेयर्स सस्पेंडेड फॉर दिस। Suspended or injured? Suspended. I think Cancelo and Rodri are unavailable for this because of suspension. I could be wrong. You guys can write in the comments. Comments में बता दो अगर मैं सही हूँ कि नहीं। मेरे हिसाब से कैंसेलो और रॉड्री सस्पेंडेड है फॉर द फर्स्ट लेग। इफ दैट इज द Oh, केस, I didn't know that. अगर वो केस है कैंसेलो और रॉड्री तो फिर काफी बड़ी बात है। Just cancel. How are Okay, only you cancel. looking for? Only Cancelo is suspended. Is writing Okay. Arnav. Surya is saying no No Walker, Walker, no no Sten. Stones, no Cancelo. So can you Walker and Stones are also out. वही. So कुछ तो है Cancelo, Stones and Walker. So okay, Rodri है. Walker, Stones, Cancelo. तो मतलब डिफेंडिंग में थोड़ी इनकी वाट लग सकती है। Hmm. Shantanu says, "How are you looking forward to the Villarreal match? They are more balanced than us Madrid fan. हम लोग मिल जाता तो इजी था रिस्पेक्ट। ए भाई, तुम लोग नहीं, अभी कोई टीम इजी नहीं है यार, चैंपियंस लीग में जितनी भी टीम बची है। नहीं, आई डोंट थिंक मैड्रिड इजी हो जाता हमारे लिए। विलारियल भी टफ होगा। इट्स द टॉप, इट्स द फोर टीम्स रिमेनिंग यार, बहुत टफ है। क्रिस एम सेज, एक मिनट, निधि भाई, आई एम प्लानिंग टू गो इन लिवरपूल नेक्स्ट सीजन। यार बिल्कुल जाओ यार। देर इज अ वीडियो ऑन आवर चैनल। आवर सेकेंड वीडियो इज अबाउट हाउ यू कैन ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू लिवरपूल एंड वॉच अ गेम। वी विल डू अ रिफ्रेश ऑफ दैट ऑल्सो, वो पोस्ट या करेंगे हम लोग। या बट देखो, बिल्कुल जाओ यार, एवरी वन शुड लिव देयर ड्रीम। I think ball passing was a bit slow from Fabinho, and we need a backup for Fabinho or maybe an upgrade Chomini. Sorry if I'm reactionary. मैंने चोमिनी को खेलते हुए देखा नहीं है यार। तो फेबिनियो के ऊपर अपग्रेड मतलब बहुत ही, अगर तुम बोल रहे हो कि फेबिनियो के ऊपर अपग्रेड है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लेयर होगा।
यार फेबिनो तो फिलहाल तो बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर इन द वर्ल्ड मेरे हिसाब से। वन मतलब ऑफ वही द मैं बोल रहा इफ नॉट द बेस्ट, टॉप 3 में तो है ही। तो उस पे आप लाइक ये तो रिएक्ट लाइक निखिल तो खुद ही बोल रहा है, सॉरी इफ आई एम रिएक्शनरी। सो इट्स ओके, यू आर बीइंग रिएक्शनरी। लेट्स बी ऑनेस्ट भाई, इट्स फेबिनो यार। फेबिनो इज वन ऑफ द बेस्ट defensive midfielders in the world right now, yeah. what match do you see us rotating? It's a good question. It's a good question. Now, Gen 6, I'm gonna respond to you as Gen 6. We got 9 odd games to go. There's no need to rotate anymore, bhai. नौ अभी मैच है, रोटेट का टाइम खत्म हो गया भाई, अभी अभी वी नौ हैव टू मैच कीप द बाकी है, कोर इंटैक्ट। 9 के 9 जीतने हैं। 9 के 9, अगर अपन 9 के 9 जीत गए मतलब हम लोग ट्रेबल जीत गए। हम्म। क्वाड्रुपल हो सकता है अगर सिटी ड्रॉप किया पॉइंट्स, बट ट्रेबल तो जीत ही गए अगर 9 के 9 हो गए। तो अभी हम लोग रोटेट वोटेट कुछ नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है निधि। एफए रिजेक्ट्स पोस्टपोनमेंट ऑफ न्यूकासल गेम, एनी थॉट्स यार? एफए के ऊपर है, क्या कर सकते हैं मतलब। there's nothing we can do. I think the earlier in the season, even Chelsea had requested for some games to be rescheduled. They नहीं denied. हुआ था। So we are not alone in this. ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा है। एल ककोए का एक और another question I wanted to ask: if we go for a player as a substitute or replacement for Thiago, who do you think we should go for? आई भाई ये थिंक थोड़ा क्यों तुमको थियागो का रिप्लेसमेंट चाहिए? ही इज हैप्पी एट लिवरपूल। सब्स्टिट्यूट तो है हमारी टीम में यार, वी हैव केटा, वी हैव अदर प्लेयर्स। कर्टिस, वी हैव एलियट, कर्टिस। फैबियो कार्वालियो नेक्स्ट सीजन। हाँ तो मतलब हाइपोथेटिकली पूछ रहे हो, इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आई डोंट नो, थोड़ा Listen, सोचना पड़ेगा। the point is that we didn't have a player like Thiago 1.5 season back. We didn't have a player like Thiago 1.5 season back, और थियागो को इंक्लूड किया 6 महीने पहले। तो सब बोल रहे थे कि थियागो हमारे टीम को स्लो करता है, और अभी आई एम नॉट सेइंग यू आर सेइंग दिस, बट 6 महीने पहले नैरेटिव ये था कि ही इज नॉट सेटल्ड इन, ही इज स्लोइंग डाउन द प्ले। नाउ द नैरेटिव इज इसका कवर कौन है। इट जस्ट गोज टू शो कि वो he is finding himself in the team. Liverpool evolves around anything and everyone, and as long as Jurgen Klopp is there, we will be okay. Is all the time. This is what I feel. Fabio Carvalho होगा, कर्टिस होगा, एलियट होगा, नाबी केटा होगा नहीं होगा, हम लोग कर लेंगे कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से। हाँ प्लेयर्स हैं हमारे में, बट मानस आई थिंक थोड़ा लेट्स हियर फ्रॉम यू। लेट्स टॉक अबाउट एल कोकोइस फर्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक जस्ट गिव अस अ थम्स अप गाइस, 10 थम्स अप दे दो। मानस विल टॉक अबाउट हाउ टू स्टे काम एज अ यंग फैन। चलो चलो, आई जस्ट नीड 10 थम्स अप्स एंड मानस विल टॉक अबाउट इट। 10 थम्स अप चाहिए मुझे बस कमेंट्स में, विल टॉक अबाउट इट। हाँ यार कल ऑफिस है, कर लेंगे वो भी, नो प्रॉब्लम। But you got to चलो repeat मानस, that. No, we haven't got any thumbs up. We haven't got आ any गए आ thumbs गए, up. चलो आ गए। वो क्वेश्चन बहुत ऊपर है, आई कांट फाइंड इट। एल कोको यार ब्रो, जस्ट कॉपी पेस्ट द कमेंट अगेन। Manas wants to see that question before he starts talking about it. He says he was asking like, how do you handle this time? He gets stressed as a young fan. How so? On which I said that we've seen shit times and this is like the best of the times. उसमें तूने बोला तेरा आंसर लंबा होगा। ओके, अगर सबके पास 2-5 मिनट है, आई होप आप लोग
stay tuned to this. When Jurgen Klopp took charge of Liverpool ना 2015 में, हम लोग 7th 8th 9th जो भी थे, और हमारे टीम में फिलहाल सिर्फ जॉर्डन हेंडरसन था, आई थिंक, एल्बर्ट मरेनो, मिन्योले, साखो, लॉवरेन, कुटिन्यो, ललाना, ये लोग सब थे. हमने बिल्ड की है ये टीम right from scratch. We literally have. We are not one of those teams which has injected. Like, of course we have spent a lot of money, and I'm not going to deny that. But there is a process to everything that has happened. So as someone who's supporting the club very newly, I hope you understand the fact that ये जो club, whatever it is going through right now, it's a process, and it is a process of hard work from everyone involved in the club. Henderson Milner भी थे. So FSG has totally revamped the structure of this club, right from rebuilding Anfield to the training facility to everything. And if you're a new supporter, like the guys mentioned, we have seen way tougher days. Like top four qualification was our aim many a times. बहुत बार हम लोग टॉप फोर में आ जाए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी. और अभी हम लोग ऐसे सिचुएशन में हैं कि हम लोग क्वाड्रुपल की बात कर रहे हैं. Jurgen Klopp के फर्स्ट सीजन में we reached the Europa League final, the League Cup final, and we lost. Then we finished in the Champions League top four. Then we reached the Champions League final, we lost that. Next year we won the Champions League. और वही season we got 90 plus points and we lost the league. The season after that we won the league. So अगर आप हमारा structure देखो, it's a process which is developing into something. So if you feel deflated anytime as a Liverpool supporter, I just want you to just look back. Just thoda sa. I'm not saying think of Bob Paisley and Bill Shankly and the history, Hillsborough, with all due respect. I'm not telling you to go through all of that. I'm just saying कि the process हमने किया है last 7 years under Jurgen Klopp, you will understand what we have gone through as Liverpool supporters, and it's a genuine process to feel pride and proud about what we have accomplished. So if we don't win anything from here on, enjoy the ride, because the ride has been absolutely amazing for people like Nidhi, me, and the 2.3 thousand supporters that we have on Menace and the Monk. Because what we're going through right now is absolutely unbelievable. As Akhilesh is saying, doubters to believers. We are absolutely doubters to believers right now. Nowhere in our wildest imagination, last 7 years, maybe we would have thought we would reach where we are to be in this position. So, if you are a new supporter getting too much stress, I'm not saying go back 1892. Just go back 7 years, try to understand where we've come from. We've lost finals, we have slipped up, pun intended. We have lost, we've had our hearts broken, and now where we are is because of the sheer love we have for Liverpool Football Club. And I'm just saying, go back 7 years. What we have achieved is absolutely remarkable. What people achieve is absolutely remarkable. And I think we have so much to be proud about. End goal is not that important. मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ जो managers ने बोला है like Pochettino, Ole Gunnar Solskjaer in the past that ego के लिए trophies important है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ. Trophies are important. And I'm going to stick to that. Trophies are important. But what we are feeling right now is just so amazing as Liverpool supporters. निधि मेरे हिसाब से ये जो फीलिंग हमें है एवरी डे इज तू और मैं बात करते हैं निधि, हम लोग ये सोचते हैं कि भाई क्या मजा आ रहा है यार लाइफ में अभी निधि. And just to finish this thought,
I'll tell you one thing. Even if we just win the League Cup this season and उसके बाद हम कुछ नहीं जीते, the thing is, next season we will go with the same vigor. That is what is special about Liverpool this season. Last season, 7 साल क्या, look where we were, last season this time we were like खत्म हो गया था hope, हाँ. and look at us now. So that's how we keep calm here. This Liverpool team is a special team. Uh, कोई जॉट इज आस्किंग रिएक्शन ऑन पॉट सैकिंग एंड अपॉइंटिंग कॉन्टे. पता नहीं यार ये क्यों बोल रहे हैं लोग यार, मतलब काफी लोग बोल रहे हैं. आई डोंट नो. I haven't seen it. I haven't seen it either. So I don't know. I love Klopp to my heart, but the amount of effort Pep Linders put onto the players is also commendable. And the new medical staff this season is also amazing. Correct? It is a team, it is not a one man job. Agreed. It is 120% भाई. it is very much a team. Literally the best time as a Liverpool supporter. 100%, yeah, zero doubt. This is a special, special time. It's always very nervy and not good for heart usually, but now we are just enjoying it, especially after the attitude team showed up against the final versus Real Madrid. It's always get back up with grace. Agreed. Agreed. थोड़ा विलारियल का बात करके let's end this live, Manas. Yeah, of course, of course. But before going to Villarreal, क्या बोलता है? एक बार फिक्सचर्स दिखा देता हूँ तेरे को, सिटी के और अपने. सिटी के नहीं, अपने ही दिखा दे, अपने ही दिखा दे. सिटी को इतना भाव नहीं देते, नहीं दे अभी. Hang on. Arey, your questions are not silly, yaar. I love that question. It was a very good question. Um, कोई silly question नहीं था यार, नितिका. It's brilliant. No worries at all. Absolutely no worries, brother. हमारे सारे fixtures remaining काफी tough हैं. But एक बार चलो कर लेते हैं. Manish has sent a super chat, so let's take that first. Monish. Monish says, I have seen the likes of Konchesky, Aquilani, and Thiago to Robertson. Yeah, bro. Um, it Yeah. was like 2005 का फाइनल was, मतलब मैंने, अगेन मैं थोड़ा हिस्ट्री में फिर से जा रहा हूँ, बट मैंने जब देखना शुरू किया 98 में, उसके 7 साल बाद इस्तांबुल हुआ. Then I thought, this is the start of something. 2006 we won the FA Cup final. 2008 we finished second, and उसके बाद everything came crashing. And then Konchesky, Aquilani, although I think was a great player, he just was very Konchesky, Jovanovic, लिंक Polson, भी हम लोग लिंक भी होते थे हम लोग कार्ल्टन कोल से. तो Joe मतलब Cole. हाँ. तो या agreed, but let's take a look at some of our fixtures. But thank you for the super chat here, Monish. Thank you so much. Share screen. Southampton is not scheduled. So we play 30th April को Newcastle after Villarreal. Then we play Spurs, then Aston Villa away, and then Wolves. This is our run-in. साउथहैम्पटन किधर बीच में क्रैम्प्ड होगा ना. हाँ, इधर कहीं डालेंगे ये लोग. हम्म. This is a tough run-in. Let's not make any bones about it. This is a tough. Newcastle will be the tricky one. Wolves भी tricky हो सकता है यार. Wolves um, भी tricky हो सकता है. Villa you never know क्या है. यार काफी अभी काफी अभी अभी सिर्फ एक अभी ही चीज है थी. अगर हमें पॉइंट्स ड्रॉप करना है ना, तो विला के अगेंस्ट नहीं करना है भाई. बस मेरा सिर्फ यही है. I don't want to see Steven Gerrard be the man who gets points off us. As so I know अभी मैंने जो भी बोला है इसके पहले, it sounds very philosophical, but इमोशनल लेवल पे मैं यही बोल रहा हूँ कि आई डोंट वांट स्टीवन जेरार्ड टू बी द मैन हु absolutely गेट्स not. पॉइंट्स ऑफ. लाइक दैट विल बी बैड. दैट विल नॉट. आई वोंट बी एबल टू डाइजेस्ट इट, ब्रो. What will be the approach of Villarreal in the next match? For me, it is to sit back and do not concede. That is very much possible. I think that might well be their plan of action. But you have to understand that Villarreal are also capable of scoring.
They scored 3 against Juventus. Hmm. So they are capable of scoring as well. Villarreal बहुत अच्छी टीम है यार. We have to उनको हल्के में नहीं ले सकते. काफी अच्छी टीम है वो. VRL is a very good side. Yeah, Unai Emery is very experienced in knockout competitions, especially in Europe. We have to, we have to take him very, very seriously. Yeah. Do you want Gerard to be absolutely professional against us? Want का Manas, I know this question is for you. Want का पता नहीं. He will be completely professional against us. He was professional against us when we played at Anfield. Don't you want Gerard to be absolutely? Yeah, I mean, of course, I want him to be. I I could be coming across very. I don't at the moment. I don't care what Gerard does with Villa. All I care about is Liverpool right now because Gerrard is the Aston Villa manager, and Liverpool is not associated with Steven Gerrard anymore. When I said that I don't want Villa to be the team that gets points off us, is because of the Steven Gerrard connection. So of course, but at the moment, it's all about Liverpool and Jurgen Klopp, and long may that continue. What do you think, Nidhi? Like, I mean, that has to be the truth, Nidhi. Like, हाँ, मतलब यार देखो, जेरार्ड के लिए he will forever be a Liverpool legend as a player. yeah, But right yeah, now, I'm not thinking too much about Gerrard. yeah, City have not been exactly. able to beat us this season. That's true. But we have not been able to beat City in the league as well this season. We Yeah. beat them in the FA Cup. Um, Gerard Moreno isn't playing the match. So I think we have to be very careful. Dan Juma is an amazing player. He Lo is. Celso, He's Lo Celso Lo as well Celso. is yeah. They have a few tricky players. Lo Celso, Parejo in midfield is also very good experienced campaigner. As cliche as it sounds, but he's very tricky. I'm sure he will find it very tough with our press, the likes of Lo Celso, Danjuma, especially Coquelin and Parejo in midfield. I think they will find it very tough. I'm not making any excuses over. We should beat them. We should definitely beat them. But they have beaten Bayern and Juventus, so they are a tough cookie to crack, yeah. But on paper, we should be getting the better of them. All right, let's take 2 3 more comments and then close this. काफी रात हो Yep. गई है. Yep. People have to go to work, attend college, etc. Um, let's appreciate how well we have done in the past 2 weeks. Man City twice, then United, then Everton. Agreed. That is so Agreed. true, Nidhi. Nidhi, that Pranav, that is such a good comment you've made That over is there. that is very true. Unbeaten Very in these four fixtures, Nidhi. okay. Right now, would you choose Pep Linders or Gerard to lead us? Neither, neither. यार देख अभी देख यार निम्बी. The thing is, Jurgen Klopp is right now, for me, though he's the best manager in the world, but definitely um, one of the best managers in the world that nobody can debate this. तो वहां से हम पेप लिंडर्स जेरार्ड दीज टू कैन हैव अ वेरी बिग फ्यूचर इन द गेम. बट हम सीधा क्लॉप से पेप लिंडर्स या जेरार्ड पे नहीं आ सकते हैं. ऐसा माई दिस इज माई ओपिनियन. सो आई एट दिस पॉइंट इन टाइम none of the two यार. But Manas, closing thoughts here. Merseyside Derby bowl, and then let's close it. Let's close it. Yeah. People have to sleep as well. We have to Yeah, sleep yeah. as well. It's been a sober night for me. It's one of the rare sober nights for me so late at night. I just want to say that I'm very happy. Yeah. Uh, we had to grind this result out, and I'm so happy we did. Robbo was phenomenal in this game, and I'm so glad he scored. Divock off the bench made such a huge difference. फर्स्ट हाफ में यार मेरे को सेंस हो रहा था कि एनफील्ड थोड़ा नर्वस था
फर्स्ट हाफ में टोटली आई कुड सेंस इट लाइक एंड आई थिंक यू कुड एंड एवरीवन कुड एज वेल सो मजा आया the fact that we grinded this result I think in a way it's a good warm up to Villarreal because Villarreal भी थोड़ा similar खेलेगा Villarreal भी थोड़ा deep ही खेलेगा it's going to make it very difficult for us so good prep for that game as well we fight on for another day 9 odd games to go we have 5 games in the 5 games more in the Premier League Nidhi 5 games more Uh, in the Premier League in the Premier yeah League, yeah six, including Southampton, six. you sure One, five or two, six three, more four, games five, in the five, five, Premier five, League. five, five, Five five. games in the Premier League, potentially three in the Champions League, one in the FA Cup. You got 9 games to go, यार. Let's just go for it. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट मैं बहुत कॉन्फिडेंट ये टीम में कि ये 9 मैचेस हम लोग वी कैन गिव अ बेस्ट और अगर हम लोग ये 9 मैचेस जैसे हम लोग खेल रहे हैं ना खेलेंगे तो वी विल विन मोर स्टफ सो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इन ऑल निधि व्हाट इज योर फाइनल थॉट्स निधि बिफोर वी एंड दिस No, first of all, thank you, yeah, Nimbi. Thank you for saying that. My final thought is that this was a tough game that we won. Let's be honest. Everton credit, you know, rivalry aside, credit to Everton for making this tough for us. But we showed that we can fight, and that's all. That matters. There are, like Manas says, yeah, there are 9 games to go. We have to keep this intensity going for all the remaining 9 games. Possibly there is glory waiting for us at the end of everything. And that's all we can say. Yeah. I mean, thank you so much. Yeah, thank you so much, whoever joined us. Really appreciate you. And up the Reds. up the Reds Cheers, guys. Good night.